Welcome students to Template 14 of the BridgeCourse, Subject English, Class 7th. So what are we going to learn in this template? The learning outcome is the students will be able to read children's literature with pleasure. Reads in order to obtain information. The students will be able to read in order to obtain information and make notes for personal reference while reading, listening to a text. इसका अर्थ है कि स्टूडेंट्स को कोई भी साहित्य पढ़ने में मज़ा आएगा और वह कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा. There are some instructions given for teachers, parents and facilitators as usual. For this template, students, you will have to read page number 20 of Standard 6th textbook 1.6 Tit for Tat. And you may also use Read to Me app, which is provided by Government of Maharashtra for reading guidance. And we will help you to do this activity. So let's start. So this is Grandpa's story of Standard 6th, Tit for Tat. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. The jackal was very clever. He tried to play trick on his friend, the camel, who was happily munching away with his food. The jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat in farmer's field. At first, the camel hesitated, but in the end he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. Jackal sat on the camel's back and the two friends crossed the river. They ate their fill in the sugarcane field. Suddenly, the jackal began to howl. "Shh," said the camel, "you will wake the farmer." But the jackal went on howling. Sure enough, the farmer and his helpers came running to the field. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. The farmer beat him up and drove him away. The jackal was waiting for the camel at the riverside. He said, "Sorry, brother, but I am in the habit of singing after a good dinner. I hope you didn't mind it much." The camel didn't say anything. He let the jackal sit on his back and entered the river. Near the middle of the river, the water was very deep. There the camel began to take a dip in the river. The jackal was frightened. "What are you doing, you silly fellow? Are you trying to drown me?" "No, brother," said the camel. "It's just that I am in the habit of taking a dip in the river after a good meal. I hope you don't mind." The naughty jackal learned his lesson. He never troubled the camel again. So students, this was the story. I have taught you this story last year. So now we are going to do the next activity. Read the story on page number 1.6, Tit for Tat, and look at the following pictures and circle the pictures for the words that are there in the story. Now see, यहाँ पिक्चर्स दिए हैं. स्टोरी में जो शब्द आए हैं तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के सर्कल द पिक्चर्स फॉर द वर्ड्स दैट दे आर देयर इन द स्टोरी. ओके, फर्स्ट पिक्चर है कैमल का. सो स्टूडेंट्स, स्टोरी में कैमल था ना, तो आपको उसको सर्कल करना पड़ेगा. स्टोरी में बोट थी क्या? नहीं, तो आपको बोट को सर्कल करना नहीं है. जो स्टोरी में है उसी को आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट, अभी वो शुगर केन का खेत था, शुगर केन यानी गन्ना, तो उसको हमको सर्कल करना है. तो वी हैव एनसर्कल्ड शुगर केन यानी गन्ना. उसके बाद एक पुलिस का चित्र दिया है. तो पुलिस तो वहाँ नहीं था, गार्ड्स नहीं था, तो वहाँ हमको सर्कल करना नहीं है. उसके बाद हम वहाँ देखेंगे जैकल. तो जैकल भी स्टोरी में था, तो हम जैकल को सर्कल करेंगे. और फार्मर भी था, तो हम फार्मर को भी सर्कल करेंगे. देखो उसके नीचे हमको क्या दिख रही है, रिवर और शुगर केन फील्ड और हॉर्स. तो ये हॉर्स तो नहीं था स्टोरी में,
तो रिवर थी और शुगर केन फील्ड थी, तो हम उसको सर्कल करेंगे। इस तरह से हमने सबको एनसर्कल कर दिया जो स्टोरी में था। बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ द इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द स्टोरी। मतलब स्टोरी में जो इंसिडेंट्स पहले हुई है उसको बराबर ऑर्डर में हमको लगाना है, जो घटनाएं जिस प्रकार से घटी है वैसे हमको लगाना है। सो आई हैव सॉल्व दिस एक्टिविटी फॉर यू, और हम उस क्रम से पढ़ेंगे। जैसे द जैकल एंड द कैमल क्रॉस द रिवर टू ईट शुगर केन, उसको हमने दिया है नंबर 1। दे एट द शुगर केन 2। द जैकल स्टार्टेड हाउलिंग 3। द फार्मर बेट द कैमल 4। द कैमल एंड द जैकल स्टार्टेड कमिंग बैक 5। द कैमल टुक अ डिप इन द रिवर 6 एंड द नॉटी जैकल लर्नड हिज लेसन 7। इस तरह से हमने ऑर्डर लगाई है। यहाँ एक सॉल्व एक्टिविटी दी है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट क्वेश्चंस नंबर 4 ऑन पेज नंबर 21। एक्सटेंशन एक्टिविटी आपको है कि रीड द स्टोरी विथ योर पेरेंट्स, सिबलिंग, और उस तरह से आपने रोल प्ले करना है। एक ने कैमल बनना है, एक ने जैकल बनना है, और ये स्टोरी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? To read the story with understanding and arrange the events in order. So this was the end of our activity. Thank you very much.